Keep your cameras on. Good morning, ma'am. Good morning. So what are we doing today? Ma'am, Question? yes, ma'am. Yeah. You have hardly a week now. Today is the 20th. And your exams are starting on the 27th. Okay. तो चलिए do's and करना है और क्या समझना है आपको? Good morning, ma'am. क्वेश्चन पेपर बाकी है अभी. हाँ ठीक लास्ट है. डिस्कशन. हाँ ठीक है. Please share the screen. Please be very particular about your idioms and phrases, one word substitutes, MCQs, fill in the blanks, confusing words. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में बुक से देख लिया जाए क्या एक बार? बुक से भी देख लो और फिर इंटरनेट से भी देख लेना. हाँ, इंटरनेट से भी देख लेना है. बिकॉज कहीं से भी आ सकता है ना. इतना इन लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूट इज लाइक कंप्लीट एक समुद्र की तरह है. सो मेनी वर्ड्स एंड वर्ड्स कैन कम फ्रॉम एनीवेयर. तो मैं वही बुक से ही देख लिया ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि पहले तो उसका हुआ नहीं. नहीं, वो तो आपको खुद करना था ना. वोकैबुलरी तो हम लोग छोड़ दिए थे कि आप लोग करेंगे. लर्न करना उसको बाय हार्ट, हिंदी मीनिंग दिया हुआ था. चलिए बुक से ही देखना तो करिए. जो आप खुद से कर सकते हैं वो कर ही लेंगे ना. जो पूछना चाहते हैं वो पूछिए आप पहले. आप वो तो आप घर से भी करो. लर्न करना है उसको. तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट तो इट हैज टू बी लर्न. चलिए क्वेश्चंस बाकी था. अनीशा बता रही है. तो व्हाट वाज द क्वेश्चंस? Yes, ma'am. We were discussing question papers. Yeah. Okay. In that, some questions were left. Okay. Who had the questions? Abhinav. Who has? क्यों उसी के पास सिर्फ क्यों? आपके पास क्यों नहीं है? हम सबके पास वो जो शेयर किया था देख. हाँ तो ठीक है, इसको बोलो. Where is he? ठीक है. इसे मैम मेरे पास देखते हैं कौन कौन. अब कॉल करो उसको. तो guys, please keep your cameras on. Mahi Singh, where are you? तुम तो कभी कैमरा ऑफ नहीं करती थी. तुम्हारा भी कैमरा ऑफ है. Yes, ma'am. Open कर रही हूँ. बाकी लोग तो लगता है सुन भी नहीं रहे. They're not even responding. No good morning, nothing. बस लॉगिन करके सो गए हैं वापस. Or are you busy in with your exams? People are still logging in. Don't have any questions? इंग्लिश वाला ही नहीं मिल रहा है. Ma'am, Anybody? till then, can we do confusing words? Yes. Yes, ma'am. Then please do that.
Yes, let us take confusing words. Confusing words are really it takes a lot of effort to learn them. Let me see how much you know, how much you remember from your first sem. कंफ्यूजिंग वर्ड्स में इसमें वही ना मैम, जैसे एडवाइस और एडवाइस, जहाँ सी और एस का अंतर होगा तो इस दोनों का मतलब क्या होगा? In the very beginning, I gave you some confusing words. All right. जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, differentiate between the pair of words given, like principle and principle, alter and alter, fair, fair. Care should be taken to differentiate them. And here's a list of words which are often confused or misused. Students are advised to go through it seriously. Now, how serious are you? I don't know. Had you been serious, you would have known. Okay, accept and accept. You have to differentiate. It means you have to define the meaning. What is accept? Accept is to? एक्सेप्ट मतलब किसी चीज को मैम एक्सेप्ट कर लेना, मतलब मान ठीक है, लेना। तो और लिखना तो इंग्लिश में पड़ेगा ना। Accept means to? He He accepted my accepted, proposal. approve or assent. He accepted my proposal. He approved of your proposal, and you are happy about it. कोई चीज स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, ये लिखना तो इंग्लिश में ही होगा तुमको ना। And accept, के सिवा. The second word, Yes, ma'am. we all failed except or excluded, excluding me, except me. Ram invited everyone except Sita. So how will you explain this word? Something which is not included, something which is excluded. Except. 2019 के पेपर्स में था बाजार, bizarre, a lot of words. किसी के पास है क्या 2019 का पेपर, क्वेश्चन पेपर? BARD, BARD, BARB, BARB, वो भी था. Bard and barb. What do you mean by bard and barb? किसी को पता है? BARD, BARB. नहीं पता है. Don't remember. Please write down the word. Confusing word. BARD, BARB. These words were there in 2019 question. Bard means poet. Yes. Bard means a poet. And barb? Bard, I don't know. Barbed wires होता है ना, जैसे किसी फील्ड में लगा रहता है, गार्डन में लगा रहता है, ताकि कोई पशु पक्षी अंदर नहीं आए. Yes, ma'am. कांटों भरा जो तार होता है ना, बार्ब Fencing. कहते हैं. हाँ, फेंसिंग में यूज किया जाता है. Yes. ताकि कोई क्रॉस करके कोई एनिमल नहीं आ जाए. Yes. ठीक है. बार्ब्ड वायर्स. बाजार एंड बाजार भी था.
Yes, ma'am. Bazaar Um, means market and bazaar means unusual. how unusual, very very strange. So there are a lot of Yes. words. Yeah, कुछ words थे जो एक मुझे याद आ रहा है, pair of words, bard and barb. Otherwise, there are a lot of words which are there which you still need to know from your content, from your book. जैसे मुझे याद आएगा तो मैं बताती जाऊंगी. Accident and incident. How will you identify accident and incident? Accident क्या होता है? Something which happened, something which was हाँ दुर्घटना हुआ, a mishap or a disaster. He met with a serious accident. तो आपको sentences बनाने के लिए नहीं आता है. You just will be asked to differentiate both the words. And the next word is accident. Sorry, incident. Incident का मतलब होता है मैम जो हमारे Phenomena. something which happened, any event. यस मैम. The incident. Incident. Accident always in a negative, and the incident was remarkable. Any event, occurrence, any event. This is an important incident in his life. एक वाक्य, एक happening, एक incident, right? एक हादसा. हादसा नहीं. Important incident in his life. Incident can be कोई वाक्य, कोई happening, कोई event, something which occurred, something which happened. Adapt, and adopt. Three words with three different meanings. Adapt, मतलब to adjust. We have to adapt to the present lockdown situation. Circumstances के अनुकूल adjust कर लेना. Adapt. Adapt means skilled होना. कोई चीज, somebody who is very good at something. You may be skilled at painting, or you may be skilled at drawing. He is adept at communication. To have an extra edge on something. You are good at something. More skillful. He is adept in mathematics, in solving problems. And अच्छा, adopt. बार्ब का क्या बताइए? BRB. हाँ? बार्ब का क्या बताइए? बार्ब का तो देखे होगे, जो एक तार जो जिसमें कांटे लगे होते हैं, जो किसी फील्ड में या किसी गार्डन में, किसी घर में भी लगा होता है, ताकि कोई पशु Yes, पक्षी ma'am. अंदर नहीं आ जाए. फेंसिंग होता है ना, मतलब उसको वायर होता है चारों तरफ गार्डन के, बार्ब्ड वायर्स. आई विश आई कैन शो Yes, यू ma'am, द जिसमें मैम निकला रहता है वो नोकीला नोकीला की जिसकी वजह से, नुकीला नुकीला. मतलब उस शहर में नोकीला नोकीला निकला रहता है, इसकी वजह से हाँ, कोई अंदर नहीं आ पाएगा या फिर कोई उसमें आ नहीं पाएगा, कोई मतलब कोई nobody can cross that wire. barbed wire. बाप जब भी आता है तो उसके साथ वायर एक वर्ड लगा होता है. बार्ब्ड वायर्स. ठीक है. तो BRB and BRD. BRD is a poet. हाँ, any word which you can come across? मैं आपको दिखाना चाह रही थी. Can you see the barbed wires? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम. आप समझ में आ गया? भूलोगे नहीं barbed wires क्या होता है. तो barbed wire, realistic, anyways. तो ये क्यों लगाई जाती है आपको पता है? एवरीबॉडी नोज. सब लोग देखे होंगे इस चीज को. यस मैम, देखिए हाँ, देखे है ना. तो नाम नहीं जानते कि द वर्ड इज BARB, बार्ब, बार्ब वायर्स, राइट. चलिए, let us move on to the next word. वर्ड कहाँ चला गया मेरा?
I lost my words or what? Okay. The next word. I switched on to some other page. Yeah. बहुत सारे पेजेस ओपन हो गए थे. हाँ. Adapt, somebody who is adjusting, he has adapted to the situation. Adapt, somebody who is skilled. Adopt, गोद लेना. They adopted a child, he did not know what course to adopt. क्या कोर्स लेना है, किस मेथड लेना है, उसको पता नहीं था. तो दो मीनिंग आ जाता है. I adopted the communicative method of teaching. ठीक है. I chose the communicative method, the interactive method of teaching business English. They adopted a child, उन्होंने गोद लिया है. ठीक है. These three words are confusing. Words differently spelled भी है. ADAPT अपने को ढाल लेना. ADEPT स्किल्ड होना. एंड OPT गोद लेना, या कोई चीज को तुम अडॉप्ट कर लेते हो फॉर योर यूज. अडिक्टेड एंड डिवोटेड. अडिक्टेड हमेशा यूज होता है नेगेटिव सेंस में. ही इज एडिक्टेड टू or habituated, somebody who has a bad habit, addicted to gambling, addicted to drugs. So drug addict is a very common term. Addicted in a negative way, and devoted in a good way, which means it used in a good sense. He is devoted to his studies. Studies के लिए आप addicted नहीं use करेंगे. Anything which is something for good, devoted, positive के लिए, और addicted, bad, negative sense. Is why they already know. These words are affect and effect. Parinam, affect and effect. The results will be parinam, or the effect. मतलब influence. The effect of smoking. The effect of cold. The effect of sickness is showing on his face. Asar. Asar और parinam. हिंदी में होगा asar and effect होगा parinam. So affect, these circumstances will not affect the result. मतलब these circumstances will not affect your studies because you're already availing online classes. An effect, and I hope the online classes will be effective. So effect is used as a noun and as a verb, which is what is effect, result. These reforms he has affected or brought about great reforms. The influence, effect, and the result, effect. Number 8. इसी तरह के words आते हैं. Excuse me, ma'am. Yeah. मैम अफेक्ट मींस जो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा रिजल्ट को, तो फिर अफेक्ट मतलब असर होता है, असर होना. ठीक है. These circumstances will not affect the result. तो अब उसका बुरा असर नहीं होगा. असर ठीक है. Can be effective. It was affected by bad health. Yes, not effect means उसका result. हाँ. The effects of practice in communication. The result, effective communication, something which gives good result. It will be effective if you take these medicines. And do not smoke. It will affect your result. Okay. Yes, ma'am. Number 8, allusion and illusion. Allusion means you referring to he made an allusion to the murder of the prince. मतलब he made a reference
रेफर किया उन्होंने। एन इल्यूजन इज भ्रम, एन इमेजिनरी अपीयरेंस, दिस इज ओनली एन इल्यूजन। एक भ्रम है, ऐसा नहीं है, कोई सच्ची बात नहीं है, दिस इज ओनली एन इल्यूजन। एंड ही वाज रेफरिंग टू सम statements in a book. Allusion is reference. Alter and alter. Did you get the question paper? पता है? नो मैम, मैं मुझसे बोल रहे हैं। सबके पास होना चाहिए ना। Alter. है मैं। Alter का मतलब होता है जहाँ पर मंदिर में, चर्च में, जहाँ पर आप कोई चीज चढ़ाते हैं किसी डायटी को। फ्लैट टॉपिंग ब्लॉक ऑफ ऑफरिंग टू डायटी, जहाँ पर आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, मंदिर में प्रसाद रखते हैं। ऑल्टर वैसे चर्चेस में होता है, थोड़ा सा एलिवेटेड, ऊपर की तरफ बना होता है। इट इज लाइक अ मार्बल का कप की तरह होता है जिसमें पानी भरा होता है, ठीक है। और वहां लोग चर्च में जाते हैं और प्रे करके उस ऑल्टर में से थोड़ा सा पानी लेकर के अपने आंखों पे लगा लेते हैं। ऑल्टर, ऑल्टर उसका वही मतलब होता है। A flat topping block for offering that he laid the offering on the altar. यहाँ पर on को ऐड कर दीजिएगा, at the altar. Let me see if I can show you altar. एक बार आप देख लेंगे, then you will remember all your life. यस मैम। Let me see. हाँ वही है ऑल्टर जो मैंने बताया था। The place where you keep your you share, ये रहा ऑल्टर। फ्लैट सर्विस दिख रहा है, देख रहे हैं आपने आप। और क्रिश्चियन लोग करते हैं यहाँ पर एक they keep a cup, और जहाँ पर वो एक पानी रहता है, उनका तो चढ़ावा नहीं रहता है, they keep water। और जहाँ पर दिस इज द ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब वही जहाँ पूजा की जगह पे जहाँ पर यू प्रसाद चढ़ाते हैं। द स्कूल विच आई वेंट टू, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, तो वहाँ के चर्च में ऑल्टर हुआ करता था। There was nothing like this. There was no table, nothing. There was just the cross of Jesus Christ. And on the wall, there was one altar, a cup fixed on the wall, and there was water put into it. Something which I was looking for, I could not find. This was the altar that I knew. And of course, altar is also a place where you यहाँ देखो, यहाँ पानी यहाँ पर है ना, कैंडल है, पानी है। तो व्हाट दे डू, प्रेयर के बाद वो लोग उसमें अपनी उंगली डुबा करके अपने आंखों में वो लगा लेते हैं। पिक्चर ऑफ क्राइस्ट।
ये रहा ना, तो इस तरह की चीजें, कि पानी हमेशा रहता है। एट एनी वर्शिप प्लेस देयर इज ऑलवेज वाटर अराउंड। So this is an altar. Lot of things you will see, you will know. Yes, ma'am. Okay, altar and altar मतलब बताइए। बताइए। Yes, ma'am. Ma'am, altar मतलब the place where we keep offerings for deity. And alter when some changes happens in something. Yeah, when you change something. Yes, ma'am. When you change something, you alter it. There is no power in the tongue of the man to alter my decision. Nobody can change my decision. These are the sentences given. Where is my screen? Yeah. To alter, flat topped block of offering to deity. चढ़ाते हैं. He laid the offering on the altar. An altar to change. There is no power in the tongue of a man to change my decision. Nobody can alter my decision. Nobody can change. Another word which can come up, opposite and opposite. Opposite, appropriate or suitable to the occasion. Your dress is opposite to the occasion for the event. It means suitable or appropriate. Opposite, you already know, somebody who is sitting right across, the opposite के सामने. And her views are the opposite of mine. Viruddh. Diametrically different. Like the opposite of black is white. Okay. The nature of Ram is totally opposite of Shyam, यही बोल सकते हैं. हाँ, इसको लिखना है ना तुम लोगों को एग्जाम में. How will you write? What sentence would you use when you're writing opposite? Opposite समझ रहे? Suitable. This is not suitable. This is suitable. ठीक है. और opposite में क्या, opposite के लिए क्या लिखोगे in English? पता है? Diametrically different, ma'am. Okay. उसी को लिख दोगे. Number 11. Artist, one who is skilled in a fine art, a painter or a singer or a dancer is an artist. Artisan, craftsman, a skilled workman, a carpenter is an artisan. एक फाइन आर्ट्स को करता है आर्टिस्ट है, और आर्टिसन वो होता है जो कि कोई बढ़ई हो सकता है, कोई कारपेंटर हो सकता है, मेसन हो सकता है, somebody who builds blocks. ठीक है. और आर्टिस्ट ई लगा हुआ है. ठीक है. यूजुअली थिएट्रिकल, अ सिंगर, डांसर एटसेट्रा. she is a very clever artist. जो थिएटर में काम करता है, somebody who works in a theater, usually theatrical, a singer, a dancer, etc. Let me. Do you have any other explanation for artist? The last one. No, ma'am. So
क्या फर्क है ये आर्टिस्ट और ये आर्टिस्ट में? अ पेंटर और अ सिंगर, अ पेंटर इज एन आर्टिस्ट, ठीक है, इज एन आर्टिस्ट। अ पेंटर एन आर्टिस्ट ई लगा हुआ है। अब पर्सन हु एंटरटेन्स, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। अगर सिर्फ आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट आ रहा है, आर्टिस्ट नहीं आ रहा है, तो what will you write? An artist is somebody who's a skilled at his work. तो skilled तो artisan भी है। तो artist, somebody who is a painter, he's an artist, he's a painter, more or less a painter ही होता है। And artist ई लगा देना होता है, it means somebody who entertains थिएटर में, जिसका पेशा ही एंटरटेन करना। She is a very clever artist. Number 12. Yes, ma'am. Ascent, going up, ascent, agreeing. To agree to a proposal, to assent. And assent is in going up. The balloon made an ascent at 4 p.m. Something which goes up. Avenge and revenge. Revenge तो आप जानते हैं, किसी से बदला लेना। Avenge क्या है? Yes, ma'am. We will avenge the wrongs done to a helpless fellow. मतलब inflict retribution, exact satisfaction on behalf of a person who is weak or repressed. किसी के लिए काम करना, किसी के लिए आवाज उठाना। Weak or the request, we will avenge, मतलब हम लोग उनका क्या करेंगे? Somebody who is avenge in हिंदी का क्या होता है मीनिंग? बड़ा अच्छा सा वर्ड है avenge का, कि किसी के लिए wrong doing, किसी के लिए कुछ गलत हुआ है, उसको उसके लिए आवाज उठाना। So we will avenge the wrong done to a helpless fellow. सत्यवादी बोल सकते हैं। नहीं, अवेंज का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना और किसी को सजा देना। वी विल अवेंज। और रिवेंज बदला लेना, सजा देना और बदला लेना, दो चीज है। अवेंज, वी मैम विल एवेंज मतलब मैम सजा तो देना, लेकिन मतलब किसी कोई अगर वीक है उसके साथ होके, मतलब उसके तरफ से उसके बोल के। साथ, हाँ उसके तरफ से, वही होता है ना कि किसी के लिए रॉन्ग डूइंग, किसी के लिए कुछ गलत हुआ है, कोई हेल्पलेस है, उसके लिए कुछ गलत हुआ है, तो उसके हित के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप सजा दिलवा रहे हैं। एवेंज मतलब बदला लेना। बदला लेना। एंड रिवेंज, रिवेंज मतलब होता है बदला लेना, और एवेंज मतलब होता है सजा देना या सजा दिलवाना। सजा और बदला फर्क हो जाता है ना। तुम बदला ले रहे हो कि तुम सजा दे रहे हो, ठीक है। स्पेशली व्हेन समथिंग रॉन्ग इज डन फॉर द पर्सन हु इज अ हेल्पलेस पर्सन, जिसके लिए कुछ गलत हुआ है, उसके उसके तरफ से, on behalf of that person, you will be instrumental in having the person punished. ठीक है। Number 14, barbarism. Barbarism, barbaric act मतलब not civilized, जो कि that was an such an barbarity, cruelty. तो barbarism होता है जो जंगली लोग होते हैं, so civilized people नहीं होते हैं, and barbarity होता है cruelty. इसी से दोनों वर्ड ही कनेक्टेड है, बट टर्म्स डिफरेंट है। ये तो इजी है, BARE, बेयर, अनकवर्ड, barefoot, his head was bare so he caught cold, सर ढका हुआ नहीं था, बेयर, या पाँव में चप्पल नहीं थे, barefoot, uncovered. And BEAR, to endure, बर्दाश्त करना, he could not bear such heavy loss. Another BEAR is a bear, which is an animal,
So battle, war and fight. Battle क्या है? Combat especially between large organized groups. ये battle क्या होता है? Organized. I like in Mahabharat. It was planned. It was organized. A pitched battle was fought between the two armies. So something which is organized is a battle. War क्या होता है? Hostilities between nations conducting by the armed forces. ये war होता है एक country से दूसरे country में. During the Second World War, many battles were fought. And fight, you can fight with just anybody. झगड़ा किसी से भी हो सकता है. Combat between two or more persons or parties. There was a regular fight between the merchants and the laborers. तो तीन term है, तीनों के different meanings हैं. Number 17, beneficial and beneficent. Beneficial, you already know, something which is beneficial, which is advantageous, which is for your good. And beneficent is applied to persons. A beneficent man who does good to others is always respected. Beneficial applied to things, beneficent applied to persons. A person who does good to others. मैंने कुछ और ऐड किया था पिछले बार जब मुझे मिला था बनाने के लिए. आई हैड यस, ये सब मैंने न्यू ऐड कर दिया था. Like I had added bazaar is a marketplace, and bazaar is a something which is strange. Titillate, to arouse interest, and titivate, to make more attractive. ये सब वर्ड्स आप देख लीजिएगा बिकॉज अनकॉमन वर्ड्स भी आ जाता है जो कि आप कभी सुना आपने नहीं हो, तो उस तरह के वर्ड्स भी आ जाते हैं. आई मेड दिस लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द on the basis of the question paper I saw. बहुत सारे words तो बाहर के भी आ जाते हैं, किताब के बाहर से भी. That is why I added more words. So titillate, uksana, arouse interest, and titivate, to make more attractive, to beautify. Torturous and tortoise. Tortoise क्या होता है? Full of twist, complex. Full of twists. कोई चीज बहुत बहुत ज्यादा उसमें twists है. बहुत something which is very complicated and very complex. And torturous, full of pain or suffering. Skeptic and septic. Skeptic का मतलब होता है a person inclined to doubt. I was skeptical about working from home. Doubtful. And septic, infected with some bacteria. P-A-L-A-T-E, palate. Palate, the roof of a mouth. आपके माउथ का जो अपर पार्ट है, इनसाइड का. Touch your tongue with your, touch your palate with your tongue. The roof of your mouth. And palette, a board of mixing colors. There's a board, जो plate होता है जिसमें जो artists होते हैं, they use a palette. Think of some words which you know.
This is your palate, the roof of your mouth. Palate. Palate. See the palate. Mouth and the palate. Okay. Did you see? Yes, ma'am. और पैलेट क्या ma'am. होता है? हाँ, पैलेट लिखा? Yes, ma'am. ये पैलेट हुआ। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। PALATE पैलेट, द रूफ ऑफ योर माउथ। कभी कभी we sometimes we do not want to give bread to the pet dog because जो bread जो होता है वो उनके पैलेट में सड़ जाता है and they have problems। कच्चा ब्रेड जो होता है वो सड़ जाता है कभी कभी, या sometimes I used to give peanut butter and bread to my little pet, तो उसके पैलेट पे सड़ जाता था उसका ब्रेड, राइट। एंड दिस इज PALATE पैलेट। इट मींस an artist use, it is a board or it's a plastic or wooden, and where artists keep their colors and everything is intact. See how you when you see the picture you will understand whether it's in your exam or not, but then something which you should know. All right, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। चलिए, palette समझ गए? The roof of the mouth, and palette is a board for mixing colors. Bow and bow, a branch of a tree, and bow to bend the head. Did you understand? BOUGH, bow. नहीं समझे? Yes, ma'am. क्या समझे? Ma'am, bowl. बाउल कहाँ तू पढ़ रही हो तुम? Ma'am, bow. Bow की Bow. meaning ma'am bowl होगी. नहीं, Oh, ma'am, bow. I think BOW. BOUGH, the bows. Yes. जो गुच्छा पेड़ से लटकता है ना उसको बाव बोलते हैं। Yes. ये देखो, कैन यू सी द बाउज ऑफ अ ट्री? जो लटका रहता है ना, जो पेड़ से लटकते हैं Yes, ma'am. गुच्छे। Can you see the tree with the bows? Yes, ma'am. You can see. Yes, ma'am. Yeah. So this is the bows. कभी कभी पेड़ से बहुत you can see very beautiful bows. You know, it looks so beautiful. Okay, okay. Course जबकि रफ, जैसे किसी सरफेस बहुत रफ है, और कोर्स डायरेक्शन। व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन विल यू टेक? कौन सा डायरेक्शन तुम लेने वाले हो? एंड कोर्स ऑल्सो मीन्स पार्ट ऑफ अ मील। आपके अब किसी पार्टी में जाते हैं तो कितने कोर्स डिनर होते हैं? पहले स्टार्टअप देंगे, पहला स्टार्टअप है, देन refreshments, then the main meal, then the sweet dish, and then the coffee. तो 5 कोर्स मील हो जाता है, part of a meal. Current and current. Q क्या है? A signal for action, a wooden rod.
Q. And Q is a line of people. So look for the Q, matlab a signal, look for the signal. And current. CURRANT, current. And CURRENT. Happening now, a flow of water, air, or electricity. And current, CURRANT, is a dried grape. It is a fruit. Dried grape. ये देख लो आप, ड्राइड ग्रेप्स, ठीक है. What is the spelling? CURRA. Hello. Current. Dried grapes, CURRANT, and CURRENT, recent. Current, तो बहुत use करते हो. Currently I am doing this. Currently I am pursuing, which I always say it is wrong. It is recent happening, current. So current, a dried grape, and current, something which happened, happening now, a flow of water, air, or electricity. The last two words, dual and duel, having two parts, dual. And duel, a fight, a contest between two people. Duel is a fight, and duel is two. Elicit. कभी कभी questions ऐसे देते हैं, I want to elicit response from you. It means I want to draw your reply. I want you to start the conversation. The teacher should always elicit response from the students. And elicit something which is not allowed by law or by rule. ये illicit है, मतलब कि ये against the law है, against the rule है. And the last pair of words today, flaunt, to show, to display. And flout means to disregard a rule. Do not flout the rule. Do not disobey the rule. Do not go against the current, against the rule. And flaunt, to display. You can flaunt your communication skills. Any other word which comes in your mind, which crosses your mind? एक लॉन्ग क्वेश्चन मैंने देखा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजेंडा, नोटिस एंड सर्कुलर. मस्ट फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ रिवाइज एजेंडा, सर्कुलर एंड नोटिस. जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के बुक्स हैं आपके, जो भी कंटेंट है उसको भी पढ़ लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चंस ऑलवेज कमिंग फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर. ये दोनों सेमेस्टर्स को कंबाइन करके क्वेश्चंस आते हैं. सो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर फर्स्ट सेमेस्टर बुक्स. ओके मैम. जब भी मैंने वर्ड दिया था आपको, ऑल दीज वर्ड्स आर फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर. जो मैंने कुछ एडिट किया था, पता नहीं एडिटेड आपके पास है कि नहीं, जो मैंने न्यू वर्ड्स उसमें इंक्लूड किया मैंने. All right. See how time flies, and very soon you'll be taking your exams. All right, guys, that's it. थैंक यू मैम.